Yes, good evening, Sukanya, Dhanish, Moore, Kiran Yadav, Harsh, Alfez, Jainam. Yes, good evening, everyone. So, welcome back to another session on biochemistry of carbohydrates, where I will be discussing the clinical aspect today. So, सब लोग clinical कर रहे थे, आज हम लोग सब clinically पढ़ेंगे. तो basics हमने सीख लिए. Now we will learn the clinical aspects. Why we are learning biochemistry? Okay. So which enzyme deficiency can cause this particular type of disorder? That is mucopolysaccharidosis. Yes. Good evening, Kiran. Good evening, Usman. So before starting the session, beta, just give me a thumbs up in the chat box that the audio and visuals are perfectly fine. That the audio and visuals are perfectly fine, so that I can start with the session, beta. So I can start with the session. Jainam says yes, the session, yeah, it is like perfectly fine. Okay, okay, beta. Alfeez Kiran, perfect, beta. Sethi Usman, perfect. Chaliye, Harsh, perfect. Let us start without wasting much more time, beta. You already know, beta. From yesterday's knowledge, you already know that GAG stands for glycosaminoglycans. Okay, we have amino sugar and acidic sugar. Okay, and we have a disaccharide repeating unit, that is amino sugar and acidic sugar from yesterday's knowledge, right? So this, yes, Ashish Lohar, good evening, beta. Welcome to the session. So glycosaminoglycans, these are also known as these are also known as, remember, mucopolysaccharides. Mucopolysaccharides. You already know what is meant by muco. Muco means mucin, right? Right? Music or mucin. Okay. Poly means many. Okay. You already know it is a heteropolymer, right? And saccharides means sugar. So it was first observed in mucin. You already know when you touch the mucus fluid, beta, it is slippery in nature due to negative charge. I have already discussed this point yesterday as well, right? So remember GAG, it is also known as mucopolysaccharides. Okay, mucopolysaccharides. Now, beta, if there if there is a defect in the degradation, if there is a defect in the degradation, if there, Raj Patel, good evening, beta. If there is a defect in the degradation, it is called as mucopolysaccharidosis. Okay, sac, yeah, saccharidosis. So that is simply called as MPS, mucopolysaccharidosis. Okay, so now what is happening, beta? What is happening? You already know. Okay, you already know we have cell, right? Suppose let us take this example of an animal cell, right? Or a human cell, any cell, beta. Cell. So you are very well aware that outermost membrane, it is the plasma membrane. Outermost membrane, it is the plasma membrane. Okay, we have the nucleus in between. Okay, we have the nucleus in between. We have Golgi apparatus also. We have multiple cell organelles. I hope you already know the basics. We have multiple cell organelles. Along with that, beta, we have a structure that is called as lysosomes. Okay, in the cell. Okay, if I'm talking about a normal cell, there are many more organelles in the cell. We have mitochondria, we have endoplasmic reticulum, there are many, but for our concern right now, in the cell, we have an organelle that is named as lysosomes. Lysosomes. Okay. Now, what is happening? You already know. Okay. My question to everyone over here, those who are listening the lecture, beta, tell me, glycosaminoglycans are synthesized in which part of the cell organelle? चलो जल्दी से इसका आंसर दो अगर तुमने कल मेरा लेक्चर सुना है एंड इफ यू वर सो अटेंटिव बेटा, जल्दी से मुझे इसका लेक्चर दो कि ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकेंस या म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स आर सिंथेसाइज्ड इन, जल्दी बताओ इसका आंसर.
Yes, Kriti, very good. Vishal, they put up very good beta. It is the endoplasmic reticulum or the Golgi apparatus. Yes, it is the Golgi apparatus or the endoplasmic reticulum. Okay. So remember we have this, yeah, Golgi apparatus and the endoplasmic reticulum. So remember, suppose if this is the Golgi apparatus, which is adherent to the nucleus, okay, which is adherent to the nucleus, or yeah, or the endoplasmic reticulum, okay, or the endoplasmic reticulum, okay. So remember beta, here the glycosaminoglycans are synthesized, okay. So I will try to explain here. The GAGs will get synthesized, right? Glycosaminoglycans or mucopolysaccharides will get synthesized, will be synthesized. This you already know, right? This you already know. So after synthesis, okay, yeah, after their use, okay, these GAGs are traveled from the Golgi apparatus and the endoplasmic reticulum to the lysosomes, okay, GAG. So after their usage, everything is done with this GAG. What now? They have to be like degraded. For degradation, they move from endoplasmic reticulum to the, yes, they move from endoplasmic reticulum or the Golgi apparatus to the lysosomes. Okay, lysosomes. Now you already know which enzymes in the lysosomes basically helps in degradation. I want answers from everyone, beta. This is the basic question that I have asked you. Which enzymes in the lysosomes will help in degradation of GAGs? चलो फटाफट से आंसर बता दो जल्दी से. I want every one of you to participate. Which enzymes in the GAG will help in degradation? Hmm. Beta, you already know lysosomes में एक enzyme होता है that is called as hydrolases. Hydrolases. Okay. Hydrolases basically, yeah, these are the enzymes which are used in degradation. Used in degradation of GAG. ये एंजाइम्स होते हैं बेटा. एज लग रहा है ना, एज का मतलब क्या हो गया? एंजाइम हो गया. एज का मतलब क्या हो गया? एंजाइम हो गया. So these hydrolases are used in degradation of glycosaminoglycans. Now what happens if this enzyme is absent? Okay, if this enzyme is absent, okay, minus NT basically stands for absent, then what will happen? So remember beta, lack of hydrolases, lack of hydrolases, yes, lack of hydrolases will lead to, will lead to accumulation, will lead to accumulation of mucopolysaccharides, mucopolysaccharides. बेटा फटाफट से बताओ, mucopolysaccharides will be accumulated in which part of the cell? Mucopolysaccharides will be accumulated in which part of the cell? चलो इसका आंसर तो दो, सारे के सारे दो इसका आंसर. Mucopolysaccharides will be accumulated in which part of the cell? चलो बताओ फटाफट से आंसर बताओ. See the picture and tell me beta. Obviously, Varun Kashyap, very good beta. It is the lysosomes only. Yes, mucopolysaccharides inside the lysosome. Beta, please try to answer the question. These are very basic questions that I'm asking you. Lysosomes. Yes, Sethi Usman, Harsh, Kiran, Aditya, Ashish, Raj, Riya. Very good beta. Answer देना सीखो बेटा, तभी you will try to know. तभी दिमाग में जाएगा. ऐसे नहीं होता है कि मतलब आई एम कमिंग एंड राइटिंग एवरीथिंग एंड यू विल सिट एट योर एंड एंड लिसन. यू हैव टू पार्टिसिपेट बेटा, right? So yes, now lack of hydrolysis will lead to accumulation of mucopolysaccharides inside the lysosome. Mucopolysaccharides are not degraded, okay, they are getting accumulated inside the lysosomes, and that will lead to a disease, that will lead to a disease, and that disease it is called as intra lysosomal. इंट्रा का मतलब होता है अंदर. ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रासेलुलर, तो सेल के अंदर. सो दिस इज इंट्रा लाइसोसोमल.
So it clearly indicates inside the lysosomes. Okay, it is intra. Yes, these are congenital beta. Yes, intra lysosomal accumulation of GAG, glycosaminoglycans or mucopolysaccharides. Mucopolysaccharides. So I can simply say that mucopolysaccharidosis. It belongs to a class of lysosomal storage disorder. Lysosomal storage disorder. So this is an important point that you have to remember, that these mucopolysaccharidosis belong to a class of lysosomal storage disorder. So that is about the basic concept of degradation. So normally summarizing this in a short manner. So remember the glycosaminoglycans, they are synthesized in the Golgi apparatus or the endoplasmic reticulum. For the degradation purpose, they have to move to lysosomes. Lysosomes contain enzyme that is hydrolases, which help in the degradation of this GAG. Now, if this GAG is absent, okay, or if this hydrolases are absent, this GAG will not be like destroyed, so it will start accumulating in the lysosome. That is something which is called as intralysosomal. Lysosome के अंदर accumulate होने लग जाएगा, and that is something, it will result in a disorder that is called as mucopolysaccharidosis, and that comes under class of lysosomal storage disorders. We have many more like diseases in lysosomal storage disorders, but one of them which we are going to learn today, it is mucopolysaccharidosis. आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन बेटा. ये कंसेप्ट समझ में आ गया क्या हो रहा है? फटाफट से एक थम्स अप दे दो चैट बॉक्स में. फटाफट से एक थम्स अप दे दो चैट बॉक्स में इफ दिस कंसेप्ट लाइक यू आर गेटिंग इट क्लियर. चल चलो, हर्ष, जयनाम, यस, किरण, आशीष, श्रेया, कृति, मनीष, अल्फेज, राज, आदित्य, वेरी गुड बेटा. Perfect, perfect, beta. Perfect. Chal. Now coming on to the very first one that we are going to discuss, it is Hurler's disease. It is Hurler's disease. Okay. Now, now, now this picture is basically of a 5 to 6 year old. Okay, 5 to 6 year old mentally retarded girl. Okay, now when I say mentally retarded beta, nowadays we are using, okay, let me just give a history and then I will come to this. So you already know the question will be like this. It is a 5 to 6 year old girl. Okay, 5 to 6 year old girl. Okay, she is mentally retarded. Mentally retarded means nowadays we call it as intellectual disability. दिमाग से पागल जिसको बोलते हैं. Yeah, it is called as intellectual disability nowadays, according to the new terms. Intellectual disability. Okay. Yes. No, she presented, okay, with protuberant abdomen. Protuberant abdomen. Protuberant का मतलब होता है abdomen बाहर की तरफ निकला हुआ है. Abdomen, it is like, okay, just see over here beta, if you can see in this particular picture, you can see the abdomen part, it is like out, protuberant, बाहर की तरफ निकला हुआ है. ठीक है, so it is, she presented with protuberant abdomen. Okay, now there are some more features that you will get over here in this particular disease, that is, yes, umbilical hernia. umbilical hernia बेटा, हर्निया का मतलब होता है कंटेंट्स ऑफ द इंटेस्टाइन. जो इंटेस्टाइन होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, ठीक है, व्हाट इट विल बी, ये अम्बिलिकस के थ्रू बाहर आ जाएगी. इफ यू कैन जस्ट सी द, या, it will be like somewhat out, okay, umbilicus के through. So yeah, that is something which is called as the umbilical hernia. Okay, so yes, after that you also should remember she is short stature. इसकी height जो है, it is very very small. She is short stature.
Okay, so right. Now beta, remember that this is a case of Hurler's disease. Okay, this is a case of Hurler's disease. Hurler's disease, or we call it as, yeah, mucopolysaccharidosis 1. Okay, or it is also called as MPS 1H. MPS 1H. H क्या है? Hurler's disease. H क्या है? Hurler's disease. Now, except for the clinical features, beta, you should know how biochemistry is used over here, beta. Remember the biochemical defect. Biochemical defect. Remember, there is an enzyme deficiency. There is an enzyme deficiency, and that enzyme deficiency, it is alpha L1. Okay, alpha iduronidase. Iduronidase. Alpha L iduronidase. So you already know this. Okay, now you are going to tell me what is iduronidase in the chat box right now. I want everyone to answer from yeah, for this particular question. Yes, Bulhan Daud. Yeah. Hello, Vita. So yeah, just try to answer that. Yes. Iduronidase. Yes. So remember, beta, if this enzyme is deficient, what will happen? Now, this enzyme actually helps in the breakdown of this heparin sulfate and dermatin sulfate. Now these two beta, you already know. Yes, you already know heparin sulfate and dermatin sulfate. These are glycosaminoglycans, right? Now these glycosaminoglycans are destroyed by an enzyme that is called as alpha L iduronidase. Now if this enzyme is deficient, so kya heparin sulfate and dermatin sulfate will be destroyed? No, they will not be destroyed because this enzyme which is used to destroy them is deficient, and that is why this heparin sulfate and dermatin sulfate will accumulate. Okay, will accumulate. Yes, it will accumulate. Yes, Abhishek Araya, यूट्यूबर, प्रमोशंस करवा रहे हो, बताओ अपने चैनल के। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू एनीवेज। So they will accumulate beta, and yeah, over here remember one more point from biochemistry point of view. The gene that is defective, the gene that is defective, gene की बात करो, enzyme की नहीं, gene that is defective, it is IDA gene. That is IDA gene. So in Hurler's disease, beta, you have to remember, okay, H से ही याद रखो, heparin sulfate, dermatin sulfate को destroy करने वाला एंजाइम जो है अल्फा एल आइड्यूरोनिडेज। आइड्यूरोनिक एसिड मैंने बताया था तुम लोगों को, याद होगा, तुम लोगों को मैंने आइड्यूरोनिक एसिड बताया था, ठीक है? तो एसिटिक शुगर बताया था ना, आइड्यूरोनिक एसिड बताया था। सो ऑब्वियसली आइड्यूरोनिडेज इस दोनों ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करेगा, बट अगर वो प्रेजेंट ही नहीं है एंजाइम, तो ये हेपारिन सल्फेट और डर्मेटिन सल्फेट कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, तो वो एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे बॉडी में, और वो एक्यूमुलेट होने लगेंगे तो वो क्या क्या करेंगे, नाउ वी विल सी। अप टिल दिस इट इज क्लियर बेटा? अप टिल दिस इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? चलो फटाफट एक थम्स अप दे दो जल्दी से। चल, अल्फेस, उस्मान, राज, रिया, कृति, हर्ष, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब देखते हैं इस पेशेंट में क्या क्या देखने को मिलता है, ऑल्दो इट्स अ पार्ट ऑफ मेडिसिन। मैंने बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट तो बता दिया है, बट चलो ठीक है, अब इसके कुछ कुछ क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। यस बेटा, डिफेक्टिव जीन है, जीन इज डिफेक्टिव श्रद्धा बेटा। क्या फायदा? देखो, एब्सेंट है या डिफेक्टिव है, एब्सेंट तो क्या ही होगा, मतलब डिफेक्टिव जीन है, ऑब्वियसली बात है, अदरवाइज प्रेजेंट ही होता तो फिर काम हो जाता ना।
चाहे इम्पेयर्ड हो चाहे एब्सेंट हो, मतलब काम तो नहीं हो रहा है। सो व्हाट इज एट मोस्ट रिक्वायर्ड कि काम होना चाहिए। नाउ what you see in these patients beta, what you will see if you just want to see the general clinical appearance, ऐसे पेशेंट्स कैसे दिखाई देते हैं बेटा, जस्ट ट्राई टू सी ओवर हियर जनरल क्लिनिकल फीचर्स ऑफ म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस। म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस, if it is very much clear over here beta, you can see that it has a coarse facial appearance। गाल बिल्कुल फूले फूले नजर आएंगे, पूरा फेस जो है it will be like swelled up। okay, so remember it, they are having a coarse facial appearance, coarse facial appearance। Second one that is very very important, that is frontal boozing। frontal boozing। now beta what is frontal boozing? आगे की तरफ आपको पता है एक बोन प्रेजेंट होती है फोरहेड पर, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटल बोन। अब मैंने आप लोगों को लिखवाया था यहाँ पे, ध्यान से देखो, देखो ये ना आगे का जो बोन है फ्रंटल बोन, वो बहुत ज्यादा एक्सपैंडेड और लार्ज नजर आता है। ओके, बहुत ज्यादा एक्सपैंडेड और लार्ज नजर आता है। एबनॉर्मल डेवलपमेंट हुआ है बोन का, बोन इज नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड, इसलिए उसका जो सर है इट इज लाइक बूजिंग आउट, बाहर की तरफ निकला हुआ नजर आ रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रंटल बूजिंग। इसका दूसरा मैनिफेस्टेशन बेटा यहां से क्लियर होता है, मैंने तुम लोगों को बताया था कि हिपैरिन सल्फेट है, डर्मेटिन सल्फेट है। बेसिकली यू ऑलरेडी नो कि GAGs जो होते हैं, ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकेंस जो होते हैं, दे आर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। ओके, अगर ये इफ दे आर लाइक, देखो किसी चीज की अति भी बुरी होती है ना, अगर वो एक्सेस में प्रेजेंट है या बहुत कम प्रेजेंट है और मतलब वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे हैं, तो अगेन दे विल हैव सम स्केलेटल मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, बोन्स विल बी नॉट प्रॉपर्ली डेवलप्ड एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज नो जनरली आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो इसका जो आगे वाला जो सर है वो बिल्कुल बाहर की तरफ निकला हुआ नजर आएगा, दैट इज द फ्रंटल ब्रूसिंग। ओके बेटा, ट्रीटमेंट पे भी आ जाते हैं, ट्रीटमेंट पे भी आ जाते हैं। दिव्या, व्हेन विल बी द एग्जाम्स ऑफ फर्स्ट ईयर MBBS? बेटा पढ़ तो लो पहले, अभी तो स्टार्ट ही किया है, कर लेंगे एग्जाम्स भी। तीसरा बेटा आप लोगों को पता है, तीसरा आप लोगों को पता है, वी हैव कॉर्नियल क्लाउडिंग। कॉर्नियल क्लाउडिंग, अब मैंने कल ही बताया था कि कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए GAG व्यूज होते हैं। अब क्योंकि GAGs आर डिफेक्टिव, तो ऑब्वियसली बात है कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी तो मेंटेन नहीं रहेगी, तो कॉर्निया में क्लाउडिंग देखने को मिलेगी। एंड अगेन बेटा इट इज नॉट सीन इन एवरी म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ओके, चौथा आपको देखने को मिलेगा डिप्रेस्ड नेजल ब्रिज। डिप्रेस्ड नेजल ब्रिज, डिप्रेस्ड नेजल ब्रिज। नो, यस, डिप्रेस्ड नेजल ब्रिज बेटा अगर आप लोग बहुत ही क्लियरली देखेंगे, यहां पे आपको देखने को मिलेगा ये जो आपकी नेजल बोन्स होती है ना, तो ऑब्वियसली बात है ये नेजल बोन्स जो है यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल फ्लैट नजर आएंगी, तो ये डिप्रेस्ड है नेजल ब्रिज। ओके, नीचे की तरफ तो कार्टिलेज होता है और उसके ऊपर क्या होता है, नेजल बोन्स होती है ना दोनों, तो ये बिल्कुल अंदर धसी हुई नजर आती है, इट इज जस्ट डीप सीटेड, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डिप्रेस्ड नेजल ब्रिज। ऊपर से आपको अगर देखने को मिले कि इसकी जो हेयर है, ठीक है, ये जो आई क्या बोलते हैं इसको, ओवर द आईज जो ये हेयर है बेटा, इट विल ऑल्सो लाइक द नंबर ऑफ हेयर विल ग्रो मोर इन साइज। ओके, द नंबर ऑफ हेयर विल ग्रो मोर इन साइज, यस, दैट इज समथिंग दैट इज या टिलोरिज्म। अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा अगर बहुत ही ध्यान से देखो कि दो टीथ्स के बीच में गैप नजर आ रहा है तुम लोगों को, तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है कि यू विल फाइंड गैप बिटवीन द टीथ्स ऑल्सो। ओके, सो यस, you will have gap between the teeth also, so remember there are gap between teeth, gap between teeth। Secondly, remember beta they have large tongue, large tongue। ध्यान से देखो इसका टंग जो है बिल्कुल मुंह के बाहर आ रहा है, so they have large tongue बेटा। यस, आईब्रोस, हाँ ठीक है कहते हैं आईब्रो है, हाँ कभी कभार ना वर्ड एग्जैक्टली दिमाग में नहीं आता है। हाँ, लार्ज टंग है बेटा, देखो लार्ज टंग की वजह से क्या होता है, या जो इसकी सांस जो लेगा ना, ये बहुत ही ज्यादा नॉइजी होगी,
वो सांस ले रहा होगा तो आपको साथ में और रहोगे तो आपको पता चलेगा, दैट इज नॉइजी ब्रीदिंग। ओके, नॉइजी ब्रीदिंग। ओके, ऊपर से स्केलेटल मैनिफेस्टेशंस भी देखने को मिलते हैं बेटा इसमें, स्केलेटल मैनिफेस्टेशंस, क्योंकि बोन्स और कार्टिलेज के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जीएजीज। यू विल सी द स्केलेटल मैनिफेस्टेशंस बेटा। ओके, दे विल बी शॉर्ट स्टेचर्ड, उनकी हाइट जो होगी बिल्कुल शॉर्ट होगी, ठीक है। क्लॉइंग ऑफ हैंड देखने को मिलेगा, क्लॉइंग ऑफ हैंड। नाउ व्हेन आई से क्लॉइंग ऑफ हैंड बेटा, क्लॉइंग ऑफ हैंड का मतलब होता है ये बिल्कुल छोटे छोटे हाथ नजर आएंगे। इफ आई हैव द पिक्चर विद मी, यस, इफ यू कैन जस्ट सी बेटा, इसके हाथ जो है बिल्कुल फोल्डेड है। ओके, इट्स जस्ट लाइक बिल्ली का पंजा जैसा होता है ना बेटा, बिल्कुल उसी तरीके से, दैट इज लाइक द फॉर्मेशन ऑफ अ क्लॉ। So yeah, you will see the clawing of hand. Okay, yeah, even you will see the visceral manifestations, visceral manifestations. Now when I say visceral manifestation, visceral का मतलब होता है internal। अब बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलेगा बेटा, बॉडी के अंदर आपको देखने को मिलेगा हिपैटोस्प्लीनोमेगाली, हिपैटोस्प्लीनोमेगाली। देखो, हिपैटो का मतलब होता है बेटा लिवर, स्प्लीनो का मतलब स्प्लीन, और मेगाली का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज। ओके, लिवर और स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा। ओके, लिवर और स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा। अगेन दिस इज नॉट कॉमन टू एवरी म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस। म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस अभी हम और पढ़ेंगे, ये तो जस्ट ओनली टाइप 1 विच वी आर स्टडिंग, वी विल लर्न मोर। सो रिमेंबर बेटा, इट इज नॉट कॉमन टू एवरीथिंग, और इसी वजह से लिवर और स्प्लीन का जो साइज बढ़ जाता है, इसलिए जो इसका पेट है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पेट बाहर की तरफ निकला हुआ है। सो दैट इज कॉल्ड एज प्रोट्यूबरेंट, प्रोट्यूबरेंट एब्डोमेन। सो दिस एब्डोमेन जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोट्यूबरेंट एब्डोमेन, राइट। सो यस, अम्बिलिकल हर्निया भी देखने को मिल सकता है। सो यस, अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा, इफ यू वांट more things you should know, there are valvular manifestations also। हार्ट में भी दिक्कत दिखाई देगी इन बच्चों के। हार्ट में क्या होता है, they will have mitral and aortic regurgitation, aortic regurgitation। इसका मतलब समझाता हूं मैं, regurgitation। अब पहले तो मुझे ये बता दो, मिट्रल वाल्व किस दो किस दो चैम्बर्स के बीच में प्रेजेंट होता है। मिट्रल वाल्व, इट इज आल्सो कॉल्ड एज विच वाल्व, एंड इट इज प्रेजेंट बिटवीन विच चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। पहले तो इतना बेसिक सा आंसर बताओ, फिर मैं बताता हूं। नहीं बेटा, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम नहीं है। हाँ उस्मान ठीक है, हर्ष ठीक है बेटा, बाकी सबको बेसिक आंसर्स तो देने पड़ेंगे ना बेटा। मैं तुम्हें मेडिसिन पढ़ा रहा हूँ, तुम बेसिक भी नहीं बताओगे तो फिर कैसे चलेगा। देखो बेटा, ये होता है हमारा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम के नीचे हो जाएगा यस लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है आयोटा, आयोटा। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है आयोटा। तो याद रखना, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में होता है बेटा आयोर्टिक वाल्व, aortic valve, right? Aortic valve। yes, अल्फेज, आशीष, किरण, राज पटेल, वेरी गुड बेटा। हाँ आदित्य, इसे बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलो रिमेंबर बेटा कि अगर इस वाल्व, वाल्व का काम क्या होता है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। कहने का मतलब है जो ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, वो वापस लेफ्ट एट्रियम में ना जाए, ठीक है। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ द वाल्व, राइट, दैट इज द फंक्शन ऑफ द वाल्व। रिजर्जिटेशन का मतलब होता है इफ द सरफेस एरिया ऑफ दिस वाल्व इज लेस। ओके, अगर सरफेस एरिया में छेद हो जाए, ओके, इसके सरफेसेस में पोर्स बन जाए, तो क्या होगा, लीकेज ऑफ ब्लड हो जाएगी, लीकेज ऑफ ब्लड हो जाएगी फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू आयोटा। तो गेट है या तो प्रॉपर्ली क्लोज होना चाहिए, अगर बीच में से छेद हो जाए तो फिर अगेन द ब्लड विल लीक,
So that is something where the surface area reduces. Okay, the surface area reduces. तो इसी को हम लोग mitral और aortic regurgitation बोलते हैं. Again, this is not common to every mucopolysaccharidosis. It is not common to every mucopolysaccharidosis. Okay, और yes, यूरिन में आप लोगों को ये सारा कुछ देखने को मिलेगा. यूरिन में यू गाइस विल फाइंड, ओके, यू गाइस विल सी या हेपारिन सल्फेट, एंड यूरिन में आप लोगों को हेपारिन सल्फेट देखने को मिलेगा अगर यूरिन टेस्ट कराएंगे. हेपारिन सल्फेट, डर्माटिन सल्फेट देखने को मिलेगा यूरिन में. ठीक है. Rauti, good evening. Yes, again, beta. So these are the general characteristics which I have discussed in detail, beta. Again, अगर इसका histopathological examination करेंगे, तो अगर इनके ल्यूकोसाइट्स को देखा जाएगा, WBCs को देखा जाएगा बेटा, तो इसमें डार्क कलर्ड ग्रैन्यूल्स नजर आएंगे, डार्क कलर्ड ग्रैन्यूल्स नजर आएंगे. और ये डार्क कलर ग्रैन्यूल्स को हम लोग बोलते हैं really body inclusions. Really body inclusions. Now these dark colored metachromatic granules होते हैं बेटा, क्योंकि जो ये heparin sulfate और ये means they are not destroyed, so they stain very darker, and that is why they give these kind of appearances on the blood smear. Okay, so this is given a specific name that is called as Rayleigh body inclusions. So I hope these manifestations are clear to each and everyone. I hope these manifestations are clear. The general clinical skeletal manifestations, heart में क्या होगा, हर्निया देखने को मिलेगा, और इसमें बायोकेमिकल डिफेक्ट और जीन डिफेक्ट आप लोग को पता होना चाहिए. Yes, Raj Patel, very good. Riya Singh, very good beta. So again, I have taken a little bit of clinical exposure. थोड़ा थोड़ा clinical भी पढ़ते रहते हैं, तो बायोकेमिस्ट्री तभी पढ़ने में मजा भी आएगा, क्योंकि बेटा क्वेश्चन तो यहीं से आएगा. क्वेश्चन तो यहीं से आएगा. तुम्हें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो बनवा के पूछेंगे नहीं, वो तो बहुत बेसिक चीजें थी जो हमने डिस्कस की थी. तो जाहिर सी बात है ये एनी हाउ बाद में भी पढ़ोगे मेडिसिन में, बट अभी मैंने तुम्हें बेसिक बता दिया है कि हाँ, अभी बायोकेमिस्ट्री से जो पार्ट लिंक्ड है वो तुम्हें पता होना चाहिए. ठीक है, बायोकेमिस्ट्री से जो पार्ट लिंक्ड है वो तुम्हें पता होना चाहिए. ठीक है. सो दैट इज अबाउट द हर्लर्स डिजीज, राइट? हर्लर्स डिजीज. यस, Prince Harsh Chainam Aditya, very good beta. Now coming on to the next one beta, coming on to the next one, that is Shea's disease. Shea's disease. Now beta, what is the difference between Hurler disease and Shea's disease? Now Shea's disease can be seen like in the group of 8-year female also, or it can be seen in 16-year female also, right? So over here she is short stature. She is short stature. Okay. She has coarse facial features. Coarse facial features. Okay. And she has hirsutism. Hirsutism. इसका मतलब पता है? hirsutism का मतलब क्या होता है? थैंक यू बेटा अलादिता, थैंक यू सो मच. हिर्सुटिज्म का मतलब होता है बेटा जब एक्सेस ग्रोथ हेयर देखने को मिलती है. इवन तुम्हें नॉर्मल फीमेल्स में भी, जो फीमेल्स मतलब प्यूबर्टल एज ग्रुप की हो या फिर, तो उसमें तुम्हें ना मतलब उसमें मुस्टैच फॉर्मेशन दिखाई देगी, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की दाढ़ी नजर आएगी, तो उसको हिर्सुटिज्म बोलते हैं. वेयर देयर इज ग्रोथ ऑफ एक्सेस हेयर, वेयर देयर इज ग्रोथ ऑफ एक्सेस हेयर. ये किसी में भी हो सकता है, तो इस केस में भी देखने को मिलता है. ठीक है, तो नॉट जेंडर बायस्ड. तो हाँ, तो वो भी तुम लोग को समझ में आना. हिर्सुटिज्म क्या होता है? इसमें तुम्हें अगेन हिपैटोस्प्लीनोमेगाली देखने को मिलेगी. हिपैटोस्प्लीनोमेगाली देखने को मिलेगी बेटा, राइट? अम्बिलिकल हर्निया देखने को मिलेगा. अम्बिलिकल हर्निया मतलब हर्निया से वो अम्बिलिकस नाभि जो होती है बेटा, उससे जो कंटेंट्स बाहर की तरफ आ जाए, दैट इज अम्बिलिकल हर्निया. ओके. क्लाउडिंग ऑफ कॉर्निया, देखो क्लाउडिंग, हेजी कॉर्निया दिखाई दे रहा है, सो दिस इज क्लाउडिंग ऑफ कॉर्निया. क्लाउडिंग ऑफ कॉर्निया, ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, कॉर्निया को ट्रांसपेरेंट मेंटेन करने में ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स का काम है. अगर ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, ठीक है, नॉट फॉर्म प्रॉपर्ली, नॉट डिग्रेडेड प्रॉपर्ली, सो ऑब्वियसली दे विल कॉज क्लाउडिंग ऑफ कॉर्निया. उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म कर देंगे कॉर्निया की. ठीक है, सो इसको हेजीनेस भी बोलते हैं, इसको हेजीनेस भी बोलते हैं. ठीक है, बिल्कुल बादल छा जाते हैं. ठीक है. अगेन यू विल सी क्लॉ हैंड, बिल्ली के पंजे जैसा हाथ दिखाई देगा इन पेशेंट्स में. यस,
बिल्ली के पंजे जैसा हाथ दिखाई देगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मतलब सारे फीचर्स तो बिल्कुल कॉमन है, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? रिमेंबर बेटा, हर्लर्स डिजीज में, हर्लर्स डिजीज में मेंटली रिटार्डेड पर्सन देखने को मिलता है, मेंटली रिटार्डेड होगा बच्चा। बट यहां पे, यहां पे बेटा शीज डिजीज में क्वेश्चन में बेटा एक वर्ड से आंसर चेंज हो जाता है, क्वेश्चन में एक वर्ड से आंसर चेंज हो जाता है। सो रिमेंबर बेटा इट इज द डिफरेंस, और इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूं सो दैट यू गाइस आर वेरी वेल, लाइक यू विल नोटिस द डिफरेंस इज नॉर्मल इंटेलिजेंस। इसका आईक्यू लेवल बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह होगा, इट इज द नॉर्मल इंटेलिजेंस which you will see, it is the normal intelligence beta, okay। एंजाइम डिफेक्ट भी सेम है, अब मैं कहूंगा एंजाइम डिफेक्ट, एंजाइम डिफेक्ट, तो एंजाइम डिफेक्ट और एंजाइम डेफिशिएंसी लिख लो, एंजाइम डेफिशिएंसी हो जाएगी अल्फा एल आइड्यूरोनिडेज, ओके। नाउ अब फर्क क्या है दोनों में, अब फर्क क्या है दोनों में, उसमें भी ये एंजाइम डिफेक्ट था, इसमें भी ये एंजाइम डिफेक्ट है, सो व्हाट इज द डिफरेंस? एक तो चलो आईक्यू लेवल का समझ आ गया, इसमें पार्शियल डिफिशियंसी होती है बेटा, पूरा का पूरा एब्सेंट नहीं होता, इसमें पार्शियल डेफिशिएंसी होती है इस एंजाइम की, पार्शियल मतलब आधा, आधा डेफिशिएंट होगा। whereas when we compared this with this Hurler's disease, इसमें पूरा का पूरा इनमें कंप्लीट डेफिशिएंसी होती है एंजाइम की, we have the complete deficiency of this enzyme। so these two points are like you have to take away points जो है हमारे, ठीक है, टेक अवे पॉइंट्स जो है हमारे। अगर मुझे हर्लर्स और शीव में डिफरेंशिएट करना है, हर्लर्स में मेंटल रिटार्डेशन होता है, शीव में नॉर्मल इंटेलिजेंस देखने को मिलती है। हर्लर्स में कंप्लीट एंजाइम डेफिशिएंट होता है अल्फा एल आइड्यूरोनिडेज, शीव डिजीज में पार्शियल डेफिशिएंसी देखने को मिलती है अल्फा एल आइड्यूरोनिडेज। फटाफट से एक थम्स अप दे दो अगर ये पॉइंट समझ में आ गया सबको, तो जल्दी से थम्स अप दे दो अगर ये पॉइंट समझ में आ गया है तो। यस, हर्ष वेरी गुड, राज वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, रिया, आदित्य, कृति वेरी गुड, किरण, श्रद्धा, मोहम्मद यासिर वेरी गुड बेटा, जयनाम वेरी गुड, प्रिंस वेरी गुड बेटा। देखो हमने नॉर्मल पढ़ा, बायोकेमिस्ट्री पढ़ी, ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स पढ़ा, अब उसको ही हमने यूज किया है इन डिजीज में, अगर वो एंजाइम डेफिशिएंसी हो गई तो क्या क्लिनिकली हो सकता है, तो देखो दिस इज हाउ वी आर लिंकिंग दिस टू द मेडिसिन पार्ट, ठीक है। और स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ लिंक करते जाएंगे, अभी मैं कल तुम्हें ओवरव्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ाऊंगा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊंगा, फिर मैं तुम्हें मतलब पूरा ग्लाइकोलिसिस पढ़ा के फिर मैं तुम्हें क्लिनिकली उसके इंपॉर्टेंस बताऊंगा, क्या क्या इंपॉर्टेंस और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से सीखेंगे, बेसिक से पढ़ा रहा हूं तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, जितना अभी बताया गया उतना मोर देन सफिशिएंट है, और डिटेल में मेडिसिन में पढ़ोगे फोर्थ फिफ्थ ईयर में, ठीक है। तो नो नीड टू वरी एज ऑफ नाउ, तो इतना ध्यान रखो कि शीज डिजीज में वी हैव एंजाइम डेफिशिएंसी, पार्शियल डेफिशिएंसी, ओके। सो यस, नाउ अगर इसको दो पॉइंट्स में लिखना हो, या देखो बेटा, चलो इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। सो रिमेंबर बेटा, डिफरेंस फ्रॉम difference from the Hurler's disease, difference from the Hurler's disease is that alpha L iduronidase is partially deficient, is partially deficient, or we can say the partial activity is preserved। आधा एंजाइम काम कर रहा है तो आधा काम तो होगा ना, ओके, बॉडी में आधा काम तो होगा ही, सो रिमेंबर, और पार्शियल एक्टिविटी इज प्रिजर्व्ड। सो रिमेंबर बेटा, इन दिस केसेस वी विल हैव नॉर्मल इंटेलिजेंस, शीज डिजीज की बात कर रहा हूं बेटा मैं, तो दिस इज शीज डिजीज, शीज डिजीज, और इसी को हम लोग
MPS म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस 1 ही बोलते हैं, बट साथ में यहाँ पे S लगा देंगे, 1S। ओके, वहां पे मैंने 1H लगाया था बेटा, वहां पे मैंने 1H लगाया था, यहाँ पे म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस 1S लगाएंगे। ठीक है, सो वी हैव द नॉर्मल इंटेलिजेंस दैट यू विल एनकाउंटर इन सच पेशेंट्स। ओके, दिमाग बिल्कुल ठीक रहेगा, संतुलित रहेगा हिंदी में। ओके, इफ आई स्पीक मोर हिंदी, फिर अगले दिन कमेंट्स ट्रोल होने लग जाता हूं मैं ना, कि प्लीज यूज मोर इंग्लिश, प्लीज यूज दैट दिस। तो ये नेचुरल है कि मतलब हिंदी आ जाती है बीच बीच में, ऑल्दो आई ऑलवेज ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू नो स्पीक हिंदी इन द सेशन, बट या जब तक हिंदी में ना बोलो मुझे नहीं लगता तुम लोग को अच्छे से समझ आता होगा, तो थोड़ा बहुत हिंदी भी जरूरी हो जाती है एक टाइम पे ना। So yes, anyways, I personally believe कि although I'm speaking everything in English also the same things, but yeah, बीच बीच में हिंदी यूज करना ठीक रहता है। चल चलिए, so yeah, we have the normal intelligence, and remember beta, we have accumulation of dermatan sulfate only. Yeah, dermatan sulfate only. Now बेटा अगर मैं एक कंसेप्ट आप लोगों को दूं, यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं आप लोगों को दूं, यस, चल, इफ आई गिव यू अ कंसेप्ट ओवर हियर बेटा, कि इफ देयर इज impaired degradation of heparin sulfate, अगर heparin sulfate it is not properly degraded, then it can cause mental retardation. Heparin sulfate, it is glycosaminoglycans, बेटा अगर ये properly degrade नहीं होगा, if it is not properly degraded, it will lead to mental retardation बेटा, it will lead to mental retardation, it will lead to mental retardation। अब यहां पे मेंटल रिटार्डेशन क्यों नहीं हुई, मैंने बोला आधी एक्टिविटी प्रिजर्व थी, तो मतलब हिपैरिन सल्फेट अच्छे से डिग्रेड हुआ, तो यहाँ पे डिग्रेड क्या नहीं हुआ, दैट इज डर्मेटिन सल्फेट। ओके, वहां पे दोनों ही खराब थे, बट यहाँ पे शीज डिजीज में, ओके, शीज डिजीज में हिपैरिन सल्फेट अच्छे से डिग्रेड हुआ है, तो इसलिए इन पेशेंट्स में मेंटल रिटार्डेशन देखने को नहीं मिलती। ओके, so what is over here, you will see there is impaired degradation of dermatin sulfate, impaired degradation of dermatin sulfate। okay, impaired degradation of dermatin sulfate, ठीक है, और this can cause mesenchymal abnormalities that we will learn like later। So as of now, just remember all these points that we have discussed, the Shea's disease and the Hurler's disease, along with the clinical manifestation and degradation of GAG। फटाफट से एक थम्स अप दे दो चैट बॉक्स में अगर ये तीनों टॉपिक समझ में आ गए हैं तो, फिर आई विल स्टार्ट विद द हंटर्स डिजीज। चलो फटाफट से एक थम्स अप दे दो अगर ये तीनों टॉपिक समझ आ गया तो। हर्ष वेरी गुड बेटा, जैनम वेरी गुड, राज वेरी गुड, रिया वेरी गुड बेटा। श्रद्धा, किरण, विवेक पटेल, मोहम्मद यासिर, आदित्य, आशीष, कृति, संजय वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, परफेक्ट। चलिए, now this is a picture beta, okay, this is a picture of a 7-year-old male। okay, now this is a 7-year-old male, male का सिंबल तो सबको पता ही है ना क्या होता है, it is a picture of a 7-year-old male। okay, now it is having coarse facial features, coarse facial features। okay, it has mucus discharge, mucus discharge, okay, mucus discharge हो रहा है बेसिकली, और it has frontal boozing also, frontal boozing, frontal जो बोन होती है बहुत ज्यादा बड़ी और अब एबनॉर्मल डेवलप दिखाई देती है, जिसकी वजह से सर बाहर की तरफ निकला हुआ दिखाई देता है, that is called as the frontal boozing। okay, claw hand, claw hand, and it appears with
clear vision. It appears with clear vision. Vision is normal. Okay. So now this disease, it is called as Hunter's disease. Okay, this is called as Hunter's disease. This is called as Hunter's disease. Okay. Remember, beta, in Hunter's disease, only males are affected. Only males are affected. Only males are affected. Okay. So over here they have clear vision. उनके विजन में कोई दिक्कत नहीं होती और इसलिए हम इसको MPS 2 बोलते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस 2, and that is Hunter disease. Hunter disease. चल. Now, when I say only males are affected, बेटा, तो ये कौन सा रिसेसिव डिसऑर्डर होगा? फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर बताओ. When I say only males are affected, beta, so which recessive disorder it will be? Chalo. Yes, Kriti, very good, beta. It is a type of X-linked recessive disorder. It is a type of X-linked recessive disorder. Beta, X-linked है. I am not focusing on your ex-boyfriend, ex-girlfriend. It is X-linked recessive disorder. Okay, it is X-linked recessive disorder. No corneal clouding is there. And remember the biochemical defect over here. Again, the biochemistry part. It is the biochemical defect. तुम लोग कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो बेटा? Which university you all are in? ठीक है, हंस लो, मतलब बता, ISM वाले हो क्या सब? अच्छा, ठीक है, ठीक है. So the biochemical defect over here, it is L-iduronate sulfatase. L-iduronate sulfatase. तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर. अच्छा, ठीक है, एशियन, ठीक है, ISM वाले, ठीक है, कस्मा, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, सब आस पास ही है. चलो, बहुत बढ़िया है. कहीं से भी हो, मेन तो है आपको एग्जाम आके क्लियर करना है, तो इसलिए अच्छे से पढ़ते रहिए. L-iduronate sulfatase. So this enzyme is deficient. Yes. So if this enzyme is deficient, beta, if this enzyme is deficient, what it will lead to? What it will lead to? It will lead to increased accumulation of heparin sulfate. Heparin sulfate and dermatan sulfate, HS and DS. It will lead to increased accumulation of heparin sulfate and dermatan sulfate. Obviously बात है, iduronate sulfatase जो है, it helps in the degradation of heparin sulfate and dermatan sulfate. Now if this enzyme is deficient, obviously heparin sulfate and dermatan sulfate का level जो है वो बढ़ जाएगा. So that is something you have to remember, beta, with the help of a mnemonic also. Hunters are always males. Okay, hunters are always males. और hunters को अगर hunt करना है तो उनकी vision क्या होनी चाहिए? Clear होनी चाहिए. So they have a clear vision. If you have to take away these 2 points, you can take from a very simple idea that hunters हमेशा male होंगे. ठीक है, I am very gender biased with this statement. एंड सेकेंडली, और हंटिंग करने के लिए हंटर्स को एक क्लियर विजन चाहिए, तो यहाँ पे कॉर्नियल क्लाउडिंग देखने को नहीं मिलेगी. आई विल टीच एवरीवेयर, राज, आई विल टीच एवरीवेयर, आई विल कम एवरीवेयर. सो एब्सोल्युटली नो नीड टू वरी. तो ये सब चीजें बात की है, जब अभी चले जाओगे तब बिल्कुल करेंगे. ठीक है, चल, इतना क्लियर हुआ सबको? हंटर्स डिजीज समझ में आया सब लोगों को? हंटर्स डिजीज समझ में आया सब लोगों को? Just give me a thumbs up, beta, if you are already like this concept is clear. Chalo. Sure. Perfect. Raj, Harsh, Aditya, Priti, very good, beta. I hope you all are writing the notes. Whatever I am writing, I hope you all are writing. देखो, बहुत easy होता है गूगल से स्लाइड्स पेस्ट कर लेना. मैं भी मेहनत करके लिख रहा हूँ तुम लोगों के साथ, so I expect the same from you people also. So yes.
Yes, Usman, very good. Prince, Raj, Ashish. Beta, again, an important announcement. I will be starting with the lower limb tomorrow. Lower limb at 11 a.m. in the morning. Okay. I want every one of you to attend the session because I will be starting from very basics. कि बोन से स्टार्ट करूंगा मैं कि हिप बोन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उस पे कौन कौन सी मसल अटैच होती है, कौन कौन सा लिगामेंट्स अटैच होता है, बोन करवाऊंगा पहले लोअर लिम्ब की सारी, हिप बोन हो गया, फीमर, टिबिया, फिबुला, एक एक बोन को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, बिल्कुल कहते हैं ना स्ट्रेच करके, जैसा बुक में दिया हुआ है उसी तरीके से। मतलब आप लोगों के नोट्स बनते चले जाएंगे, आप लोग के नोट्स बनते चले जाएंगे, एंड दैट इज समथिंग व्हिच आई वांट यू पीपल टू अटेंड द सेशन टुमारो एट 11 am एंड लर्न फ्रॉम बेसिक्स। ठीक है, नहीं भी कुछ आता है बेसिक्स एनाटॉमी का तो कल मैं वो भी बताऊंगा साथ साथ। ठीक है, सो I want every one of you to like learn lower limb that I'm starting from tomorrow, right? So yes, please, आपके notes भी बन जाएंगे ना, so you will be like very happy as of चल ठीक है उस्मान, very good. Now difference between hurler and hunter's disease. Now बेटा hunter's disease देखो, hurler और hunter में क्या फर्क होता है? Hurler's disease basically beta, it is not much more common, it is like rare. Hunter's disease as compared to hurler, it is most common. Okay, it is most common. Second point, Hurler's disease, it is rapidly progressing. All the clinical features, it is rapidly progressing. But Hunter's disease, it is a slow progression. It is a slow progression. Yes. Third beta, remember we have corneal clouding, which can be there, okay, in Hurler's, and corneal clouding is absent in Hunter's disease. Remember beta, Hurler, it is a autosomal recessive condition, autosomal recessive condition, and Hunter's disease is a X-linked recessive condition. And remember, X-linked कहने का मतलब है only males are affected. Only males are affected. Okay, only males are affected. So yes. Now coming on to the next one, that is, yeah, coming on to the next one, that is the eye cell disease. Coming on to the next one, that is the eye cell disease. Now, eye cell disease, it is also called as inclusion cell disease. It is also called as inclusion cell disease. Now, what is it actually? What is it? Okay. Now, let us first understand why this disease is happening. You already know that. Let us just take the example of the cell again. Let us just take the example of the cell again. And you already know the cell is containing nucleus. We have the plasma membrane. So these things I'm like not labeling as of now. You already know. So you already know we have, okay, which organelle in the cell synthesizes proteins? Which organelle in the cell synthesizes proteins? चलो आंसर बताओ चैट बॉक्स में फटाफट से, बहुत देर हो गई आंसर नहीं किया है, फटाफट से आंसर बताइए. Which cell organelle synthesizes proteins? Okay, ribosomes. Ribosomes, very good. Aditya, Medicure. Okay, ribosomes. Riya Singh, Prince, Raj, very good. Sethi Usman, very good. Kiran Yadav, Harsh, Alfez, very good beta, very good, perfect, perfect. Now you already know the proteins. Okay, now if I say the proteins, they are synthesized in endoplasmic reticulum, and specifically it is the rough endoplasmic reticulum, or it can be the ribosomes, it can be the free ribosomes. Okay, ribosomes, yes.
Now, now, beta, these rough endoplasmic reticulum. Now, if suppose let us say that this is the rough endoplasmic reticulum. Okay, the rough endoplasmic reticulum, or I can take this example here also, like this is the rough endoplasmic reticulum. Okay, now if the rough endoplasmic reticulum, it is synthesizing some enzyme that has to reach the lysosomes. Okay, for example, this is the lysosomes. Lysosomes. Okay, so RER beta, basically they are synthesizing these lysosomal enzymes, and these enzymes. Okay, now this RER is secreting enzymes. Okay, so yes, let me just draw it. Yes, synthesis of enzymes, and these enzymes has to reach lysosomes. These enzymes has to reach lysosome. Now beta, from RER to lysosomes. Uh, Let us understand this with the help of an example. For example, if I have to send a letter from my home to my friend's home, so who will take the letter? It is the postmaster, right? It is the postmaster in very simple language. So these enzymes, okay, they have to, like, they are carried by the postmaster, okay, the postmaster, and then they are delivered to the correct address, because postmaster only knows the correct address. The postmaster only knows the correct address, and that postmaster or the address, it is in the form of mannose 6 phosphate. Mannose 6 phosphate. तो कहने का ये मतलब है, नाउ RER ने एंजाइम सिंथेसाइज किया, लाइसोसोमल एंजाइम्स बनाया. Now these lysosomal enzymes, they are attached to mannose 6 phosphate, and after attaching to the mannose 6 phosphate, it will be delivered to the lysosomes. That is the actual address that where it has to go. Now beta, if there is any defect in the attachment of mannose 6 phosphate to this enzyme, lysosomal enzyme, तो ये एंजाइम्स क्या लाइसोसोम्स तक पहुंचेंगे? फटाफट से बताओ, तो क्या ये एंजाइम्स लाइसोसोम्स तक पहुंचेंगे? बताओ. जयनाम नहीं. नहीं. ये स्कृति, आदित्य, अल्फेज, राज, रिया नो, किरण नो. ऑब्वियस सी बात है, ये नहीं पहुंचेंगे ना बेटा. उस्मान नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि तुमने पोस्ट मास्टर ही गलत चूज कर लिया. कोई है ही नहीं पोस्ट मास्टर, तो तुम्हारा लेटर लेके जाएगा कौन? तुम्हारा वो लेटर बाहर ही घूमता रहेगा. तो नॉर्मल आइडियल कंडीशंस में देखें, इफ वी सी इन द आइडियल कंडीशंस इन रियल लाइफ, तो तुम लोग तो यू आर थिंकिंग दैट कि वो लेटर कहीं भी चला जाए वो सब ठीक है हमारे लिए, बट बायोकेमिस्ट्री में तो उसको एग्जैक्ट एड्रेस पे ही जाना पड़ेगा, और एग्जैक्ट एड्रेस तक लेकर जाने वाला कौन है? हमारा पोस्ट मास्टर. तो नॉर्मल लाइफ में तो तुम यही सोचते हो जहां फंस गया चलो ठीक है, बट ओवर हियर तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, राइट? So mannose 6 phosphate. Okay, now if there is any defect, if there is any defect in attachment of, हाँ बिल्कुल, जैनाम, आशीष, उस्मान, अल्फेज. अल्फेज बड़ा यस सर कर रहे हो बेटा, अभी जाओगे तो पता चलेगा. वो सारी पोस्ट मास्टर बने फिरोगे बिल्कुल पूरे कैंपस में ना. चलो कोई कोई बात नहीं है, ठीक है. इफ देयर इज एनी डिफेक्ट इन द अटैचमेंट ऑफ mannose 6 phosphate, mannose 6 phosphate to lysosomal enzyme. Okay, these are lysosomal enzymes beta. Now this is the lysosomal enzymes. Lysosomal enzymes are synthesized in the rough endoplasmic reticulum. From the rough endoplasmic reticulum, they have to go to the lysosomes for its function, but they cannot go to the lysosomes because
उसका जो पोस्ट मास्टर था मैनो 6 फॉस्फेट उसके साथ अटैच ही नहीं हुआ, तो वो इधर उधर घूमता रहेगा. So remember, if there is any defect in the attachment of mannose 6 phosphate to lysosomal enzyme, remember, then this lysosome, then this lysosome will lysosomal enzyme will not reach the lysosome. Okay. Now guys, अब इसमें अब इसमें तो okay, there is a point of difference बेटा. These lysosomal enzymes, they are not coming to the lysosomes. They are not coming to the lysosomes. It means the enzymes are already increasing in the blood plasma. Okay, so you will see there will be elevation. इसको important mark करो बेटा, dollar लगा लो इस point पे. There will be elevation of enzyme. There will be elevation of enzyme in the serum. Okay, in the blood. Okay, and you already know there will be absence of enzyme in the lysosomes. Absence of enzyme in the lysosomes. Now, my question to everyone over here, अब तुम लोग मुझे बताओगे what is the difference between eye cell disease and lysosomal storage disorders? मैंने वो आंसर लिख दिया है स्क्रीन पे. I want you people to answer me now. कि लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स जो हमने पढ़े MPS 1H, MPS 1S और MPS 2 जो हमने पढ़ा, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम आई सेल डिसीज? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बेटा दोनों के कंसेप्ट में? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? देखो, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स जो थे बेटा, they are accumulating inside the lysosomes. They are accumulating inside lysosomes. Okay, and these are degraded by lysosomal enzymes. These are degraded by lysosomal enzymes. Yes, these are degraded by the lysosomal enzymes, MPS, mucopolysaccharides or glycosaminoglycans. Okay, these are present in the lysosomes. ठीक है, lysosomal enzymes उसको डिग्रेड करेंगे. ओके, अब lysosomes में glycosaminoglycans are not degrading. Okay, they are not degrading, which means that it is getting accumulated in the lysosomes. It is getting accumulated in the lysosomes. Okay, but over here beta, what is absent? What is the difference in eye cell beta? There is elevation of enzyme in the serum. एंजाइम तो पहुंचा ही नहीं लाइसोसोम्स तक, एंजाइम तो बाहर ही घूमता रह गया ब्लड में. तो ऑब्वियस सी बात है लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स देखने को नहीं मिलेंगे. एंजाइम्स देखने को नहीं मिलेंगे. ठीक है, उस केस में भी हो सकता है पार्शियल डिफेक्टिवनेस हो सकती है. ठीक है, even if I can say that eye cell disease will resemble MPS, but what is the difference beta over here? That eye cell disease, it is more severe. It is more severe. It is more severe, right? Now this eye cell disease can resemble MPS. बिल्कुल same features देखने को मिल सकते हैं, but the very much fact that you have to remember the enzyme will be elevated in the serum part only in the eye cell disease, right? Yes, because enzyme की production, okay, enzyme production. अच्छा, मुझे चलो इस चीज का आंसर बता दो. enzyme production normal किस में है, आई सेल में है कि MPS में? where the enzyme production is normal? फटाफट से इसका आंसर बताओ. चलो फटाफट से इसका आंसर बताओ, enzyme production normal किस में है?
हाँ, एंजाइम तो नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा है ना बेटा। वेरी गुड श्रद्धा, प्रिंस, किरण, चलो सबको समझ में आ गया। आई हर्ष वेरी गुड, रिया, उस्मान, मनीष, जयनाम, आशीष वेरी गुड, समझ में आ गया ना, तो ठीक है। तो यू आर वेरी वेल अवेयर कि एंजाइम प्रोडक्शन तो यहाँ पे नॉर्मल रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि एंजाइम पहुंच नहीं रहा है अपनी जगह तक, वहां पे तो एंजाइम ही डेफिशिएंट था, ठीक है, वहां तो एंजाइम ही डेफिशिएंट था। तो ऑब्वियसली बात है उसमें तो ब्लड में भी लेवल्स कम दिखाई देंगे, यहाँ तो ब्लड में सबसे ज्यादा लेवल दिखाई देगा क्योंकि एंजाइम तो अच्छा खासा बना हुआ है बट इज नॉट रीचिंग द सीरम, ठीक है। जो एंजाइम डिग्रेड करने के लिए चाहिए थे वो एंजाइम वहां बने ही नहीं, और यहाँ पे वो बने हैं बट वो एक्चुअल जगह पर नहीं पहुंचे। दैट इज इन द वेरी सिंपल लैंग्वेज आई कैन से यू। तो चलो ये सब हो गया, आई सेल डिजीज, ओके। नाउ नाउ रिमेंबर द बायोकेमिकल डिफेक्ट, biochemical defect in eye cell disease. Eye cell disease. So remember, beta, it is a protein targeting disorder to lysosomes. Protein targeting disorder to lysosomes. Remember, it resembles mucopolysaccharidosis. Mucopolysaccharidosis. Okay. And remember, it is like more severe, okay. Enzyme deficient over here beta, enzyme deficient, it is n acetyl, yes, n acetyl glucose phosphotransferase, phosphotransferase. Now you already know we have mannose, okay. Mannose is seen inside or attached to the lysosomal enzymes, right? Now this mannose has to convert to mannose 6 phosphate, mannose 6 phosphate, okay. This mannose has to convert to mannose 6 phosphate. So conversion of mannose to mannose 6 phosphate, it requires n acetyl glucose phosphotransferase. फॉस्फो का मतलब है फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करना, फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करना। सो अगर मैनो 6 अगर दिस एंजाइम इज डेफिशिएंट, सो मैनो 6 फॉस्फेट नहीं बनेगा, मैनो 6 फॉस्फेट विल नॉट बी फॉर्म्ड, और अगर ये नहीं बनेगा तो पोस्ट मास्टर ही नहीं बना, पोस्ट मास्टर ही नहीं बना, ओके, पोस्ट मास्टर ही नहीं बना। तो ऑब्वियसली, yeah, obviously it will not get attached to, yeah, so post mastering नहीं बना तो it will not get attached to the lysosomal enzymes, yes. So obviously बात है पोस्ट मास्टर मैंने वैसे बोल दिया है, पोस्ट मास्टर ऑफ सेल भी बोलते हैं उसको, तो सेल तो नहीं, मतलब मैंने वैसे नाम दे दिया है, ठीक है। चलो, तो what will happen, the lysosomal enzymes, lysosomal, वर्षद, अगर अगर बहुत ही अर्जेंसी में नोट्स चाहिए तो यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप ऑफ माइंड, ओके। तो यस, आई हैव जस्ट टेक्स्टेड इट, इफ यू वांट लाइक नोट्स पता नहीं नोट्स के आते रहते हैं, तो यस यू कैन लाइक ज्वाइन दिस ऑन माय टेलीग्राम इफ यू वांट, okay. I will like update it on telegram as well. No need to worry after the sessions, no, uh, the team will like combine all the pdfs and send it at once, but if you need it on an urgent basis I'll send it to you. No need of like requesting for the notes. I'll like, if you are writing it with me it's okay, otherwise if you like see the pictures, they I've just taken it from internet only, like it's not my personal pictures, I've just copied it from internet, okay, just to explain you people, okay. So like nothing new that I have done over here, okay. So yes, remember it is n acetyl glucose phosphotransferase, right? Right, okay. I have texted beta in the chat. चल,
Now what will happen, beta? Lysosomal enzymes don't reach the lysosomes. Okay, and yes, lysosomal enzymes don't reach the lysosomes. लाइसोसोम्स तक पहुंची नहीं, क्यों? क्योंकि उनको ले जाने वाला पोस्टमास्टर खराब हुआ, खराब प्रोडक्शन थी उसकी. So obviously what it will lead to, this is called as inclusion cell disease. Inclusion cell disease or eye cell disease. Eye cell disease. Now, now beta, again मुझसे किसी ने पूछा था, आई थिंक उस्मान, इट वाज यू ओनली, कि इट वाज यू ओनली उस्मान, की इज दिस ट्रीटेबल? क्या हम इनको ट्रीट कर सकते हैं ऐसे पेशेंट्स को? कैन वी ट्रीट दीज पेशेंट्स? सो आई वांट एन आंसर फ्रॉम यू पीपल. Is it possible to treat these patients? What do you think as a doctor? चलो आंसर बता दो फटाफट, तो मैं उसका आंसर दे दूंगा. पेशेंट को मारना है या जिंदा रखना है? जल्दी बताओ. जिंदा रखना है ना? दैट्स यही शपथ लेते हैं सब लोग. यस, वेरी गुड बेटा. उस्मान, राज, किरण, श्रद्धा, हर्ष, कृति, वेरी गुड. आशीष, यस. रिया, यस. यस बेटा. एंजाइम डेफिशिएंट है ना बेटा, तो बाहर से एंजाइम दे दो. इफ एंजाइम इज डेफिशिएंट तो बाहर से एंजाइम सप्लाई कर दो. दैट इज कॉल्ड एज एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी. इसको बोलते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी. ओके, सो रिमेंबर बेटा, अगर मैं एमपीएस की बात करूं, अगर मैं एमपीएस 1 की बात करूं, हर्लर्स डिसीज, हर्लर्स डिसीज, या एमपीएस 2 की बात करूं, हंटर्स डिजीज की बात करूं, तो हर्लर्स डिसीज के लिए वी हैव एन एंजाइम दैट इज एल्ड्यूराजाइन. एल्ड्यूराजाइन, नो बेटा, yes. Hunter's disease के लिए remember we have elaprase. Okay, we have newer modalities to treat these disorders, and that is just in the form of these enzyme L-durazine and elaprase. Okay, we have mucopolysaccharidosis 6 also, Metabolic Lemmy disease, but again that's not much more important. So yes, you have to remember this whole thing. Okay, enzyme replacement therapy are available for MPS 1 and 2, and that I have already written. Whatever is the latest update I have given you, right? The biochemical defect in eye cell disease, again the similarities remain the same as to the mucopolysaccharidosis. Difference between hunter and hurler: hunter's disease, Shear's disease, and hurler's disease, and degradation of GAG. I hope the concepts are clear to each one of you. I hope the concepts are clear to each one of you for today. So just give me a thumbs up, beta, if you understood this topic. Just give me a thumbs up if you understood this topic. Yes, Harsh, very good, beta. Riya, very good. Shraddha, Kriti, very good, beta. Jainam, Raj, yes. Aditya, Prince, Raj, Sanjay, Ashish, very good, beta. Again, I will be starting with the anatomy of the lower limb from basics. Okay, बिल्कुल जैसे किसी बच्चे को पढ़ाते हैं बेटा, I will teach from the scratch. So I want every one of you to attend the session tomorrow morning 11 a.m. and I'll wait for you guys. Okay, साथ साथ बायोकेमिस्ट्री भी करते रहो और एनाटॉमी के नोट्स भी बनाते रहो, so that it is right, it is like you can see. Again, I'm typing Varsha, it is for you only. Chal, okay guys, I hope let's end the session today. Yeah.